Alright, Ji. So now that we have seen both of the flavors of the naive Bayes classifier, the flavor which is used for discrete valued input features and the flavor that is used for continuous valued input features, यानी Gaussian naive Bayes या Bend naive Bayes, अब हमने ये सारा कुछ देख लिया है. आई होप कि ये सारा कुछ करना इसका प्रोसेस आपको क्लियर है. बाय द वे मैं दोबारा ये वाजे कर दूं कि जो एग्जांपल्स इससे पहले आपको शो की हैं उन एग्जांपल्स का मकसद वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है बल्कि प्रोसेस पूरा का पूरा एलैबोरेट करना है कि किस तरह से when you pass through step by step what are the steps जिससे गुजर के you can implement the whole algorithm. अब हमारा नेक्स्ट एक काम और जिसको हम बहुत क्विकली देखेंगे, हम इसकी उतनी तफसील में नहीं जाएंगे जितनी तफसील में हम लेट्स से लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में गए थे या KNN के केस में गए थे. विल जस्ट वेरी क्विकली लुक एट द डिसीजन बाउंड्री फॉर योर नाइव बेस एल्गोरिथम एंड वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि डिसीजन बाउंड्री व्हाट डज इट लुक लाइक. वी हैव ऑलरेडी सेड कि हमारा जो ये एल्गोरिथम है ये एक लीनियर नाइव बेस इज अ लीनियर क्लासिफायर. So it makes sense that the decision boundary should be a straight line. But is it always a straight line, or could it be something more than a straight line? Could it be like piecewise linear and something more than that? And as it turns out, it is that. So let's see कि इसकी decision boundary किस तरह की होती है. So let's start with a very simple example. हम assume ये करते हैं कि हमारे पास जो priors हैं वो equal हैं. So ताकि prior का impact बीच में से ख़त्म हो जाए. And now in the first example we're looking at the case where we have different means but same variance. So हमारे पास distributions हैं जिनके बीच में दोनों classes की let's say दो classes हैं उसके बीच की distributions हैं और उन दोनों distributions के means अलग अलग हैं लेकिन उनकी spread एक ही तरह से है, spread एक जैसी है. In that case the decision boundary would be a straight line or a hyperplane. For example यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये मीन्स अलग अलग हैं लेकिन जो वेरिएंस है वो एक ही तरह से बिल्कुल हुई हुई है. यानी कि दोनों फीचर्स के अलॉन्ग लेट्स से मेरे पास ये फीचर x1 है और ये मेरा फीचर x2 है, तो इन दोनों के अलॉन्ग जो ये वेरी कर रहा है ये एक ही तरह कर रहा है. यानी x2 के अलॉन्ग ज़रा ज़्यादा कर रहा है और x1 के अलॉन्ग थोड़ा कम कर रहा है. द रीज़न वाई वी हैव सच काइंड ऑफ अ डिसीजन बाउंड्री इज़, अगर आप थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करें, मैं इसको ये आगे बढ़ा कर ले जाऊँ, लेट्स से यहाँ से ये इस तरह से आगे बढ़ रही है and let's say for the other one let me make these yellow lines. I'm not doing a very good job of this but it would be something like this. So जहाँ ये intersect करेंगी वो basically ये points हैं and these points, intersection points, define your decision boundary. So in ये आपकी isolines जो हैं, ये isolines या contours जो हैं basically ये show कर रही होती हैं distance from the mean. So जहाँ पे ये intersect करती हैं these are points which are equidistant from the two means. Because दोनों variances सेम है, यानी दोनों पॉइंट्स के अराउंड अराउंड ये दोनों मीन्स के अराउंड जो है वो एक ही तरह से चीज़ वेरी कर रही है, एक ही तरह से इसकी वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं. लिहाजा जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो ये इसी सिमेट्रिक अंदाज में करेंगी और you'll get a straight line or a hyperplane. So that's the decision boundary for the case where you have different means but the same variance. When you have the same mean but different variances, so this is the case where you have for example इस तरह से and you have this mean और ये दोनों की दोनों आपकी distributions का mean let's say यही है. So एक distribution कुछ इस किस्म की है और दूसरी distribution जो है let's say taller and narrower distribution है और वो कुछ इस किस्म की है. I've not done a great job drawing this but anyhow. So you have the same mean but different variances. In this case जहाँ ये दोनों points intersect करेंगे this is going to become your decision boundary. ठीक है. So इसके एक तरफ एक आपके पास क्लास मिलेगी और इसके बीच में आपको दूसरी क्लास मिलेगी. अगर इसी चीज़ को हम 3D के अंदर घुमा दें या इसको हम इससे ऊपर की डायमेंशंस में ले जाएं तो दिस इज गोइंग टू बिकम आइदर अ सर्कल और एन एलिप्स. अगर जो वेरिएंस है ये डिफरेंट है अलोंग डिफरेंट फीचर्स, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि वेरिएंस डिफरेंट थी अलोंग डिफरेंट फीचर्स, तो वो एलिप्सेस बन जाते हैं. तो जो इसकी डिसीजन बाउंड्री भी होगी वो सर्कुलर होगी या एलिप्टिकल होगी. In a more and this is what it would look like. The blue is one class and red is the other class and the decision boundary is here. ठीक है. But in the general case for your naive Bayes the decision boundaries are parabolic curves. ठीक है. So जैसे यहाँ पर आपको दो क्लासेस नज़र आ रही हैं, एक ब्लैक डॉट्स में और दूसरी आपको ये ब्लू प्लस की फॉर्म्स में नज़र आ रही हैं. बाय द वे ये सब के सब डायग्राम्स मैंने यहाँ नीचे इन लिंक से ली हुई हैं. तो अगर मैं इसके ऊपर गाउसियंस फिट करूँ तो दिस इज़ व्हाट वी गेट एंड दिस इज़ वेयर द contours intersect and you get your decision boundary which is parabolic. ठीक है. तो इसी पैराबोला के जो स्पेशल केस के अंदर आपको एलिप्सिस भी मिल जाएंगे और इसी पैराबोला के स्पेशल केस के अंदर यू विल जस्ट गेट अ स्ट्रेट लाइन जहाँ पर ये ऊपर हमने एग्जांपल देखी है ये वाली कंडीशंस मीट हो रही होंगी. सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ दिस.
यहाँ पर आपको कॉन्टूर्स भी नज़र आ रहे हैं और एक्चुअल 3D प्लॉट भी नज़र आ रहा है। ये बेसिकली एक ही चीज़ की दोनों साइड्स हैं। यू हैव डिफरेंट मीन्स बट यू हैव सेम वेरिएंसेस। वो जहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं वो सिमेट्रिक बनता है एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। सो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन between these points. This is the case जहाँ you have the same mean but you have different variances and these are the points which act as the decision boundaries. इसके अंदर एक क्लास होगी और इसके बाहर जो है वो दूसरी क्लास होगी, ठीक है। और यही हायर डिमेंशंस के अंदर सर्कल बन जाएगा या एलिप्स बन जाएगा और उससे हायर डिमेंशंस में ये स्फेरिकल हो जाएगा। एंड देन दिस इज द केस, दिस इज द जनरल केस जहाँ पे आपके मीन्स और वेरिएंसेस कुछ भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगी आइसोलाइंस, जो उसमें पॉइंट बन रहा होगा, जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे होंगे वो डिफाइन कर रहे होंगे कि मेरी डिसीजन बाउंड्री की शक्ल क्या है। सो हियर यू सी लाइक दीज पैराबोलिक डिसीजन बाउंड्रीज। दिस इज टू फर्दर एलेबोरेट दैट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन जो इंडिकेट कर रही है डिसीजन बाउंड्री को, इसी का ये जो कंटूर प्लॉट है। एंड इफ़ यू बेसिकली ड्रॉ दीज फर्दर यू विल फाइंड कि जो ये आइसोलाइंस जो इंटरसेक्ट करती हैं वो इन्हीं पॉइंट्स पर करती हैं एंड यू गेट दीज पैराबोलास। एंड अगेन दिस इज द केस जहाँ पर इनकी इंटरसेक्शन सिमेट्रिक है एंड you get a straight line. So to conclude, the decision boundary for your naive Bayes would look like either a parabolic curve generally, जिसके special case में you may get elliptical or circular decision boundaries, or you may get straight line decision boundaries, but in all cases these curves are piecewise linear because it's a linear algorithm. लिहाजा it's going to be piecewise linear, लेकिन it defines these interesting curves which are equidistant from the different means जहाँ से हम इसको find out कर रहे होते हैं।